Can you see my screen and can you hear me properly? Okay, thank you very much for joining me again today in the session. And what we are going to do is, Azra, you are number one. I would request you to unmute yourself, and I want to have one small question to you. If you if you came up with the option, probably you will be the winner. Otherwise, we'll give this a mic or give this option to any other. Azra, come on, please join me. Azra के बाद मैम Javeria all the way from Abu Dhabi. You are number second. Can you hear me? Azra, are you there? Yes, sir. Okay, excellent. Azra, can you see my screen? Something wrong with perhaps Azra's the environment in which she is sitting. Let me assure you that this is something you must have to keep always in your mind whenever you're sitting for the class or for the learning purpose. You must have to be at a very quiet place. That is foremost important. Okay, let's move to the next. Ma'am Javeria, can you hear me? Assalamu alaikum, sir. Yes, sir, I can hear you. Alhamdulillah, walaikum assalam. Thank you very much for joining me today's session and even the yesterday's session जो आपने all the way from इतनी दूर से और busy होने के बावजूद आपने join किया. अच्छा. Thank you. Can you please confirm? Can you see my screen first? Yes, sir, I can see you. Okay. Would you believe it? This is the project which I have had in the morning, and the requirement was, can you please wipe out this aircraft from first and then the shadow out of it? And the project worth was initially 1 gig, means Fiverr Cooper 1 gig means $5, and later that extended from $5 to $10. It is just a kind of experience sharing with all of you so that के आपका confidence level again एक दफा और build up हो जाए कि yes, you can all do this sort of things. Okay, Azra. Right. Can you please confirm which exactly is the software we can use for doing this kind of work? First Sir, question. Photoshop. Absolutely, because we are dealing in the Photoshop. We are dealing with the photos. So Photoshop is the ideal tool for editing this kind of work. So that means let's me open up Photoshop for all of you. So now we are in the Photoshop. So can you please, the second question, can you please confirm which exactly could be the tool we can use for this kind of work? A bit tricky question. Again, I would say कि okay, correct, absolutely correct. जो students otherwise they are interested, you can join me in the chat session. आप chat के ऊपर मुझे जवाब दें और जल्दी जल्दी जवाब दें. This question is for Ms. Javeria. Okay, जी. Sir, लेसो टूल से करके उसको. Okay. What's next then? We can make a copy of it. Lasso tool से तो हम इसकी selection लेंगे और then उसके बाद if you wanted to delete that selection तो most probably वो तो नहीं हो सकेगा. Vajia, very well done. Abdullah, you nailed down. Perfect. लेकिन मैडम वजिया ने अभी जवाब देना है. Varisha, very well done. Sorry, sir, I don't know. No, okay, go ahead. Okay, ji, it's to be honest, it's the absolute perfect tool is the patch tool. Okay, and I appreciate that just a stamp tool that is Nurul Muntaha, absolutely right. The other tool is iske alawa is the stamp tool. Keep in mind, the both tools are actually absolutely for this kind of work. So whosoever is replying me on this, that was absolutely the right answer for your question. So how can you do it? That is something amazing thing which I just wanted to give you a kind of just a demonstration. Okay, so आपने करना कैसे है अगर कोई ऐसा काम आपके पास आ जाए. So first you have to make it zoom to 100%. You can see at this is 0.jpg and this is 100% by the way.
And just to give you one more clip, this is something, by the way, I have done. I have come up with something like this. अगर मैं पहले आपको ये दिखा देता, तो you might never be able to tell me कि यार इस जगह पे क्या चीज है, या इसके ग्राउंड पे is there anything which you can see? Nothing. So that means ये है वो लेवल जो हमने अचीव करना है with the help of just two tools. एंड बाय द वे, अगर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे 2 से 3 प्रोजेक्ट ले लेना, सिर्फ 2 से 3 प्रोजेक्ट, आपके इस पूरे ट्रेनिंग सेशन की कॉस्ट उससे निकल आती है. एंड दिस जस्ट 2 and 3 प्रोजेक्ट मींस, मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ कि ये कितनी देर में हो जाएगा. सो लेट्स, प्रोफेशनल वे इज लेट्स मेक फर्स्ट कॉपी ऑफ दिस. दैट्स द वन, सो दैट कि हमारे पास ओरिजिनल सेव है. ओके, सो दैट इज द बैकग्राउंड कॉपी, मींस स्टूडेंट्स कॉपी. ओके, सो दैट कि मैं स्टूडेंट कॉपी के ऊपर अपनी काम करने लगूँ. सो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू पिक द पैच टूल. ओके, मेक अ सिलेक्शन ऑलमोस्ट क्लोजर टू दिस, सो दैट कि आपके लिए ये सिलेक्शन कंपैरेटिवली जो जो सिलेक्टेड एरिया होगा वो सारा का सारा पैच हो जाएगा. ओके, almost to the circle. Let's drag it up to somewhere here and somewhere here, and here we go. Here we go. Done. करेक्ट. चैट में प्लीज कंफर्म करो जिसको ये चीज पसंद आई और जिसने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली, उसके लिए क्लैपिंग. ठीक है, डन. इट्स द पावर ऑफ फोटोशॉप. करेक्ट. Excuse me, sir. Yes, please go ahead. Who is this? Sir, मैं नुमान हूँ. Okay, Noman, all the way from Karak. Yes, please go ahead, Noman. सर आपने कौन सा वाला टूल्स यूज किया, आप जरा फिर से यूज कर लें इसको. This is the patch tool. Photoshop में I have selected the patch tool first and just on single click उसकी selection ली और उसको drag करके इधर या इधर. Ideally speaking, आपने करना ये है कि drag उस तरफ करना है which is actually the most closest area of this. Okay, let me undo this. Okay, and अगर मैं patch tool यहाँ से उठाकर, अगर मैं इसको उठा कर ले जाता हूँ इधर, तो आई थिंक ये भी शायद कुछ हद तक काम कर जाएगा, लेकिन कीप इन माइंड कि ये वाली चीज यहाँ के ऊपर आ जाएगी. ओके, सो वो क्या होगा, वो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. नुमान अली मीर, अपना माइक म्यूट कर दो प्लीज. ओके, सो हियर इज द प्रॉब्लम. थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम फील हुआ कि अगर मैं यहाँ से ट्रैक करके इस तरफ पैचेस को करता हूँ, सो दिस वुड बी अ बिट डार्कर साइड. सो ये यहाँ पे फिट नहीं बैठेगी. सो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट आइडिया लगाया कि आइदर वी शुड गो अपवर्ड और आइदर वी शुड गो दिसवर्ड. ठीक है, सो दिस इज वेरी मच योर चॉइस. दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट बाय द वे, बिकॉज ये ज्यादा क्लोजर है, वो ज्यादा एरिया दूर है. सो इट्स बेटर कि आप इसको विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की या इवन विदाउट शिफ्ट की आप इसे उठा के यहाँ पे ले आए. मेरे हिसाब में दिस वाज क्वाइट बेटर. ठीक है, ये थोड़ा सा एरिया बीच में गड़बड़ कर जाएगा, लेकिन इसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं. आप दोबारा इस वाले एरिया को पैच उठाएं, इसको दोबारा पैच करें. दैट्स इट. ठीक है, जहां जहां आपको ये दोबारा फील हो कि ये गड़बड़ हो रही है, उतने सारे एरिया को पैच उठाएं और यहाँ से पैच करें, या इसके बजाय इधर से इधर पैच करें, व्हाइटिश एरिया के साथ पैच करें. एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस. आप 3-4 बार ये काम करेंगे, यू फाइंड आउट इट इज मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग. Okay, now let's move to the next. That is the most trickiest thing, the bottom. ठीक है ना, bottom को अब आपने कैसे करेक्ट करना है, that is something a bit, ऊपर वाला comparatively easier था, this one is a bit difficult. इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा और zoom करना पड़ेगा. Okay, so let me go to 200% zoom and then उसके बाद, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल किसी डिटेल का वो नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ा सा दरमियान में रह गया. अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम. आप ऑटोमेटिकली इतने से एरिया को किसी भी तरीके से जहां पे आपको पैच बिल्कुल फिट लगे बस वहां छोड़ दें. ओके, लेकिन एज वी हैव टू डू कपल ऑफ अदर थिंग्स, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर. सॉरी, ड्रैग करके मुझे लाना है बिल्कुल इस लाइन के अलोंगेट, और इस सारे को पहले मैंने करना है पैच. ओके, सो व्हाट आई डू इज कि मैं इसको उठा के स्ट्रेट अवे लाऊंगा पहले इधर. ठीक है, और कंट्रोल डी. So if you think that's okay, so that's okay. That's okay. So I think that's very much okay. Okay जी, आप ही रह गया ये वाला पोर्शन. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में इतने सारे एरिया को दोबारा पकड़ेंगे.
और इसको करके यहाँ से इधर पैच कर, या यहाँ से नहीं तो यहाँ से इधर पैच कर, करेक्ट। सो दैट जहाँ पे भी आपको ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे आप वहाँ से जाके इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको साइड पे साइड पे साइड पे एंड डार्किश और डार्किश और डार्किश की तरफ करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये समवेयर किसी न किसी जगह पे जाके ये बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठ जाएगा उसके ऊपर। ओके, सो लेट मी अनडू दिस फर्स्ट। और अगर ये नहीं हो रहा, लेट सपोज ये नहीं हो रहा, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर भी कोई इशू नहीं है। फिर आपने इंस्टेड ऑफ गोइंग पैच टूल आपने इतने सारे एरिया को करना है सेलेक्ट। ओके, और यहाँ से पकड़ना है स्टैम्प टूल, इसको थोड़ा सा करना है छोटा, इंस्टेड ऑफ 76 लेट मी गो टू 24 25 समवेयर। इज इट ओके? एंड जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे। ओके, क्लिक करना है यहाँ पे और उसके बाद ऑटोमेटिकली हल्का 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 थोड़ा सा इस लेवल पे कंट्रोल डी इज फॉर डीसेलेक्ट। एंड नाउ हैव अ लुक एट दिस, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। ओके, चलें जी, लेट्स मूव अगेन टू द पैच टूल। एंड इसी तरीके से आप पैच टूल से इतने वाले एरिया को, स्टार्ट वाला एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल है, सो मैं जल्दी से मैं जाता हूँ इसके ऊपर और थोड़ा थोड़ा इसको, थोड़ा थोड़ा इसको कुछ समवेयर यहाँ पे इसको कर देता हूँ। सो दैट मीन्स डन। अब आप करें इस वाले एरिया को पिक, एक दफ़ा आप इसे उठा के नीचे लेके आए ऑलमोस्ट सो दैट के एंगल इसका करेक्ट आए एंड वी आर डन। ओके, इस तरह करते करते आप छोटे छोटे पैचेस से उठा के बनाते जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो आपका डिजायर्ड एरिया है वो सारा का सारा 100% एब्सोल्युटली जिस तरह आप चाह रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, वी हैव टू डू couple of more things, so I straight away without wasting any time मैं straight away जाके इतने सारे एरिया को बहुत जल्दी से पिक करके और यू कर देंगे। ओके, सो ऑटोमेटिकली बिल्कुल ऐसे ही आप इस वाले एरिया को पिक करें और पिक करने के बाद उठा के आप यहाँ पे, एंड दैट्स डन। थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, दिस प्रोजेक्ट वाज वर्थ $10। $10 means you can very easily calculate that in terms of the conversion. I'm sure okay, ma'am Javeria is sitting in Abu Dhabi, you have a different conversion rate. So in Pakistan, whosoever is sitting, multiply this with 167, 168 का डॉलर है, तो you can very easily calculate that कितना टाइम हमें लगा और कितनी देर में हमने क्या चीज़ अचीव कर ली। That's why I'm seriously interested for all of you students that you should something is going wrong. Uh, okay, let